हेलो लर्नर्स, आज हम सीखेंगे कंजंक्शंस। कंजंक्शन इज़ ए वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस, यानी कि जो शब्द दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ते हैं या फ्रेजेस को जोड़ते हैं या फिर क्लोजेस को जोड़ते हैं, उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस तीन तरह के हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखते हैं वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं। ब्रेड एंड बटर, फ्रेजेस इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। क्लॉज, आई केम बट ही लेफ्ट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, these conjunctions join equal parts जैसे words, phrases और independent clauses. Basically इनको fan boys conjunctions भी कहते हैं. Example, I like tea and coffee. She was tired but she kept working. He didn't call nor did he write. Subordinating conjunctions. These are used to connect a dependent clause to an independent clause. डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं. एग्जाम्पल, बिकॉज आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग. Although he was tired, he continued, I will call you when I reach. Correlative conjunctions, they are used in pairs to join equal elements in a sentence. ये हमेशा जोड़े में आती हैं और इक्वल एलिमेंट्स को जोड़ते हैं सेंटेंस में. जैसे एग्जांपल है बोथ एंड, बोथ रिया एंड टिया मीन either or, you can have either tea or coffee. Neither nor, neither he nor I was present. Not only but also. She is not only smart but also kind. अब देखते हैं कंजंक्शंस की पोजीशंस और पंक्चुएशन रूल्स. तो कंजंक्शंस मस्ट बी प्लेस्ड करेक्टली टू कनेक्ट क्लॉजेस क्लियरली. यूज़ अ कोमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइनिंग क्लॉजेस. तो हमें कोमा का इस्तेमाल करना चाहिए बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले. Don't start every sentence with and or but in formal writing. Subordinating conjunctions ज़्यादातर dependent clause से पहले लगती हैं. Example, I was late but I finished my work. Because it was raining, we stayed home. Thank you. Keep learning, keep growing. Have a nice day.